Let me get started with the electrode potential again. Electrode potential again. Am I audible and visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is our blackboard clear to you? Yes, sir. Okay, wonderful, wonderful, wonderful. Let me get started. We say that electrode potential is defined as the potential difference between the electrode and the electrolyte in which it is dipped. It is a potential difference between the electrode and the ions of the same type. Ions of the same type. When we dip a particular electrode in the ions of the same type. Ions of the same type, then what happened there? A particular potential difference got created. A particular potential difference got created, and such a potential difference is called as electrode potential. Electrode potential. Suppose I am taking an electrode. I am taking an electrode M here. I am taking an electrode M here. I am taking an electrode M here. Then what I am doing? I am doing that. I am taking the ions of same type. Ions of same type. Ions of same type means that I am taking Mn positive ions. Mn positive ions. Now what I am doing that I am dipping this particular electrode in this electrolyte, which is constituting the same type of ions. Same type of ions. Now, I'm assuming that this particular electrode is acting as anode. It is acting as anode. It is acting as anode. All of you know that at anode, always which reaction takes place? Reduction. Is that? Oxidation. Very good. Oxidation takes place. Always here oxidation takes place. Always here oxidation takes place. And all of you know that oxidation is gain of electrons. Is that? No, sir. Load Eh? electron. Is No. loss of electrons. Wonderful. It is loss of electrons. It is loss of electrons. So by knowing these two things, that at anode always oxidation takes place, and oxidation means loss of electron. So here you can say that the reaction will take place as such. The reaction will take place as such. This metal rod undergoes the process of oxidation, and got converted into Mn positive X ions and got converted into Mn positive aqueous ions with the liberation of n number of electrons. With the liberation of n number of electrons. When this type of reaction takes place at anode, you can say that Mn positive ion is liberated here. Mn positive ion is liberated here. Got deposited here. Mn positive ions. Mn positive ions. You can see that an extra Mn positive ions got deposited in the solution. Extra Mn positive ions got deposited on the solution. As the oxidation takes place again and again, Mn positive ion concentration, extra Mn positive ion concentration got increases within the solution, got increases within the electrolyte, and at the same time, you can say that n number of electrons also got liberated here, and they got accumulated on this rod, and they got accumulated on this metal rod. This is the case number one. At the same time, you can say that if we are taking the another electrode, M solid, and I am dipping this electrode in its own ions. So, for example, Mn positive ions. Now, what I am doing that, let us suppose that this electrode acts as cathode. Let this electrode acts as cathode. Is this more visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me assume that it is now cathode. So at cathode, oxidation takes place, isn't it? Reduction takes place. Very good. Reduction takes place.
reduction takes place. Reduction takes place. And reduction is loss of electron. Is that? Gain of electron. Very good. It is gain of electrons. I was saying it is gain of electrons. It is gain of electrons. When reduction takes place at cathode, gain of electrons take place. So the reaction will be reversed. This reaction will be reversed here. This reaction will be reversed here. You can rewrite that. Now, Mn aqueous positive ions, Mn aqueous positive ions plus n number of electrons got converted into M solid. Got converted into M solid. Now what happened here? When the process of reduction takes place, you can say that the Mn positive ions, the electrons here accumulated on this rod got trapped by these Mn positive ions, and they led to this rod make slight positive. And here on the accumulation of these electrons, this will lead to this particular rod to make it negative. So what happened here at all? What happened when the negative charge, or you can say electrons, are accumulated on this charge, on this rod, and the Mn positive ions, extra Mn positive ions got accumulated on this solution. At one stage, a potential difference got created between this metal rod and the electrolyte. This particular potential difference is called as electrode potential. Now, this electrode potential, when measured under, or when it occurs under standard conditions. Standard conditions are 200 degree temperature. 289 Kelvin. 289 Kelvin. Kelvin. Okay. 3 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure and 1 2 molar molar concentration. How much? 1. 1 molar concentration, 25 degrees Celsius temperature, and 1 bar pressure, These are the standard conditions. And when we are going to take the electrode potential as the standard conditions, you can easily say that now our electrode potential is called as standard electrode potential. And standard electrode potential can be represented as E naught of cell. Standard electrode potential E naught of cell. You can say that standard electrode potential cell. अभी इसमें आप करें तो E में बन जाएगा E naught, अभी ऐसे बोल सकते हो E naught. अब आपके पास ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बन गया, ये भी दो प्रकार का हो सकता है. कैसे हो सकता है? यहाँ से दिख रहा है ना बोर्ड, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ. No sir. तो आपके मुंह में जबान नहीं है, आप बोल नहीं सकते सर, नहीं दिख रहा है. ये से क्यों बोलना पड़ता है आप लोगों को? अभी नहीं दिखा सर. गूंगे हो गए हो आप लोग? No sir. फिर ठीक है, मैंने इसका गूंगे. सर नीचे वाला नहीं दिख रहा है सर. हाँ? E नोट तक दिख रहा है ना सर? चलो इसको भी मैं एक सिखा देता हूँ. Now, when you are going to measure the electrode potential at standard conditions, that is 1 molar concentration, 25 degrees Celsius, and 1 bar atmospheric pressure, you can say that now we have the standard electrode potential. Now, what happened? You can say that before few minutes you see here that oxidation takes place here and reduction takes place here. Actually, this electrode potential gives you the tendency of an electrode, that how fast it undergoes oxidation or how fast it undergoes reduction. That is actually the electrode potential. That is actually the magnitude of the electrode potential. So you can say that this standard electrode potential can be of 2 types. Either the standard oxidation potential or standard reduction potential. You can represent standard oxidation potential and standard reduction potential by 2 ways. One method is that you can simply rewrite here that you know that at anode oxidation takes place, so it is standard oxidation potential, E naught OX oxidation, and E naught
reduction, RED reduction. You can say you can write like that. The other method of representation is that you can write at anode, oxidation takes place. So when oxidation takes place, M solid got changed to Mn positive. You can say that M solid got changed to Mn positive. Now you can see here that the oxidation state of this M is 0, and from 0 it got to plus, and you can say plus M, plus 1, plus 2, plus 3, whatsoever. So there is decrease in the oxidation number. Is that? No, sir. Increase in oxidation. No. Increase in the oxidation number. Wonderful. There is increase in the oxidation number, and when there is increase in the oxidation number, you can say that it is the reduction potential. Is that? Oxidation potential. Reduction potential? Oxidation. Oxidation potential. Wonderful. This is the oxidation potential. Now, and you can say that now this is the standard oxidation potential. This is the standard oxidation potential. SOP. Follow SOPs को follow करना है. अब आप याद रखेंगे COVID-19 के related एक term आई थी SOPs. Follow SOPs, and here in our electrochemistry we can use SOP for the standard oxidation potential. And at the same time you can say that this standard reduction potential can be represented as Mn positive got changed into M solid. This got changed into Mn positive into M as solid. And this is called as standard reduction potential. Very good. Standard reduction potential, SRP, standard reduction potential. And by convention for a Daniell cell, we always take the standard reduction potential. I'm going to repeat it again, that by convention we always prefer to take standard reduction potential for the Daniell cell. Is that clear? Is that clear up to that? Yes. Okay. Anybody having problem in English? You can say. I'm not using Urdu because I came to know that most of the students here are facing problems with the accent of the teachers coming from outside. Is that true? I think no, my accent is not so bad that you cannot understand my Urdu. You can understand. I can speak. Our topography, Sonamarg and Kargil, these are the neighboring two places. Their topography matches, so our accent can also match. मेरी उर्दू गड़बड़ लगती है कहीं? No sir. अच्छा, इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम? इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में किसी को प्रॉब्लम? Anybody else? No sir, प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर उर्दू थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है सर. अच्छा, उर्दू थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. तो अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर देता हूं कि जैसे आपको लगेगा कि सर की उर्दू सिर के ऊपर से जा रही है या समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे रोक दो. हाँ बोलो सर, एक बार फिर से रिपीट कर दो, ठीक है ना सर? यस सर. चलो उर्दू में मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देता हूँ. 2 मिनट फट से 2 मिनट में उर्दू में रिकैप्चुलेट कर देता हूँ. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होता है इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट में, जिसमें आप इसको डिप कर रहे हैं, उन दो के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. हम किसी भी इलेक्ट्रोड को ले लेते हैं. सपोज करके मैंने m इलेक्ट्रोड इस एक सॉल्यूशन में डाल दिया, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया. And what happened here that इसमें जो अपने आयंस थे वो Mn पॉजिटिव आयंस थे. इसी के आयंस, ये m इलेक्ट्रोड था तो इसके आयंस Mn पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल होंगे. तो अब ये Mn पॉजिटिव आयंस में डिप हो गया तो ये एक इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा. ये सेटअप एक इलेक्ट्रोड का हो गया. अगर आपको कोई बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रोड, आप बोलोगे जब हम एक मेटल रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, उसी के आयंस में डिप करते हैं, उस सेटअप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड बन गया. फिर क्या हो जाएगा काम, जब हम इसको एज्यूम करेंगे
एक्ट करने के लिए एनोड और इसको हम एज्यूम करेंगे एक्ट करने के लिए कैथोड, तो दो टाइप ऑफ रिएक्शंस हो जाएंगी, एक में तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी एनोड पे और दूसरे पे रिडक्शन हो जाएगी। तो आप फिर क्या बोल सकते हो कि कैसी रिएक्शन हो जाएगी, और उस रिएक्शन के होने के बाद आप देखेंगे दैट ए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑकर हो जाता है इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट में, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब आप इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नापते हैं कहां पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस में, 1 मोलर concentration 95 डिग्री सेल्सियस and 1 bar atmospheric pressure, then you can say that our electrode potential becomes standard electrode potential. And this standard electrode potential can be of two types. अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड है तो आप बोलेंगे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हो एसओपी, और ई नॉट एम एन पॉजिटिव एम ऐसे लिख सकते हो, या ई नॉट रिडक्शन लिख सकते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी। सो वी हैव द टू टर्म्स एसओपी and SRP. One is the standard oxidation potential and the other is standard reduction potential. Every element, you must know that every element has got a fixed value. Every element has got a fixed value of standard redox and standard oxidation potential. Important thing you have to remember that every element, कोई भी element है ना उसको fixed value assign किया गया है, किसके लिए, standard redox potential के लिए और standard oxidation potential value के लिए। For example, अगर आप E naught of, अगर आप ले रहे हैं E naught of Cu gives us Cu2 positive, इसकी वैल्यू मैं बाद में थोड़ा पुट कर लेता हूं, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। और दूसरा मैं ले रहा हूं E naught of Cu2 positive to Cu2 हाँ, मैं आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा हूं कि मेरे बच्चों मुझे ये बताओ, what is this and what is this? Is this SOP? Yes, sir. Or is this SRP? सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये SOP है कि SRP है? सर यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, और जब यहाँ से चल रहे हैं तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है सर, तो 0 से लेके +2, is there increase or decrease in the oxidation number? Increase. Absolutely right, sir. It is increase in the oxidation number, and you have already learned that the increase in the oxidation number is Oxidation. Wonderful, oxidation. So when oxidation takes place here, it will act as anode or cathode. Anode, wonderful. It can act as anode. अब ये सर एनोड एक्ट करेगा, और जब ये एनोड एक्ट करेगा तो एनोड को ही तो हम लिखते हैं सर क्या, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे चल देते हैं सर, ए +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में था और यहाँ से चला गया है 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, सो व्हाट हैपेंड हियर, +2 से लेके कहाँ पहुंच गया ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, Decrease in oxidation. wonderful, decrease in the oxidation state means Reduction. Wonderful. So it will act as anode or cathode. Cathode. Wonderful. So it must have SOP or SRP. SRP. Standard reduction potential. Wonderful. You are all smart guys. SRP, standard reduction potential. So I already told you that every element has got a significant fixed value for the standard redox potential as well as the standard oxidation potential. For this, it is -2.1. It is -2.1 volt. It is -2.1 volt. SOP, standard oxidation potential for this electrode. Okay, can anybody else tell me what would be the standard reduction potential for this particular cell? +2.1 volt. Wonderful, sir. It must be 2.1 volt, +2.1 volt, because we have already known that the E cell is equal to E cathode minus E anode. E cathode minus E anode. And my man will say that E cathode will be equal to minus times E anode. बस साइन कन्वेंशन रखना है यार, एक में से माइनस डाल देना है तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर आ रही है ना, सबको समझ आ रही है ना यहाँ तक बात? सर हाँ
सर एसओपी में माइनस क्यों आ रहा है सर? इसमें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो किसमें? वहां पे सर -2.1 वोल्ट आया ना सर। This is the calculated value. This is the calculated value, and this calculated value is calculated from voltmeter. Let me discuss one more thing. A simple one thing. Can you give me 2 minutes? Yes, sir. After 2 minutes, I hope that you will get the answer of this question. After 2 minutes, I hope that you will get the answer of this question. SHE, she है ये? Standard hydrogen electrode. Wonderful. So it is standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode is used as the reference electrode. Can you name one more reference electrode? किसी एक और इलेक्ट्रोड का नाम बता सकते हो जिसको हम एज रेफरेंस यूज करते हैं? एक और होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी हम यूज करते हैं एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक खास बात है, जरा बताओ क्या? E नोड विल बी 0 होगा। सर एक तो ये एक्ट कर सकता है एज एनोड भी, एक्ट कर सकता है कैथोड भी। एक बात तो ये है सर, चाहे आप इसका एसओपी ले लो या एसआरपी ले लो, दोनों क्या होते हैं? 0। 0/0। मान लीजिए अब मैंने यहां से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना दिया, हमने यहां से बना दिया, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के बाद हमने क्या काम कर दिया? हमने यहां से लाई ये वाला इलेक्ट्रोड, हमने यहां से ला लिया, कौन सा वाला इलेक्ट्रोड हमने यहां से लाया? Cu gives a Cu2 पॉजिटिव, ये वाला इलेक्ट्रोड मैंने यहां पे लाया, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रोड मैंने यहां पे लाया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया काम? इनको मैंने वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, वंस चलो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। वोल्टमीटर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसका पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल तो जीरो है। जब हम सर्किट को क्या करेंगे? सर्किट को जैसे ही हम इंटरनली कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट होना हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा, और उसके बाद इसका पोटेंशियल इस वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रीड हो जाएगा, और वो यहाँ पे रीड हो जाएगा। तो ये आता है -2.1 वोल्ट। तो इसको यहाँ से कोई परेशानी वाली बात ये नहीं समझनी है कि यहाँ पे सर ऑक्सीडेशन होगी या यहाँ पे रिडक्शन होगी। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है जो हमें मिलती है किसके द्वारा? वो हमें वोल्टीमीटर के द्वारा मिलती है। और एक चीज आपको ये जरूरी ध्यान में रखना है कि जब आप इस चीज को नापते हो, वहां से आप सिर्फ एक ही चीज एनालाइज करते हो कि रिड्यूस्ड फॉर्म किसी की हाइड्रोजन की नॉर्मल फॉर्म से, गैसियस फॉर्म से स्टेबल हो सकती है, और किसी की रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो सकती है? नॉर्मल हाइड्रोजन से लेस स्टेबल हो सकती है। ये एनालिसिस आप इस चीज से कर सकते हैं। ये होगी एक बात। दूसरा, हैव अ लुक हियर। माय स्क्रीन इज शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। Is that? Yes, sir. Okay. What we have to find is that. Is 12th file folder. Yeah. What is this? SHE. It is the standard hydrogen electrode. Actually, we have the 1 molar solution of H positive. For example, we are taking the HCl solution of 1 molar. H positive ions are there, and we have the H2 outlet here on this particular glass tube, and platinum electrode inside it, platinum wire fixed here, and H2 gas at 1 atmosphere is inserted from here. So you can say that this platinum gives the surface area to this hydrogen gas to get absorbed, and this is our hydrogen electrode. When we जब हम इसको पुट करते हैं एक साइड से, तो इसकी तो 0 वैल्यू होती है,
तो डेफिनेटली फिर जो वोल्टमीटर रीड करेगा रीडिंग, वो तो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड की करेगा जो हमने सेल में दूसरे साइड से लगाया है। दूसरे साइड से लगाने वाले इलेक्ट्रोड को ही ये मेजर करेगा। वहां से जो वैल्यू आती है वो प्लस आए या माइनस आए, वही हम वोल्टमीटर की रीडिंग उठा के लेते हैं और बोलते हैं दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, हैव अ लुक, हैव अ लुक, हैव अ लुक। At one side we have the metal electrode M with the molar concentrations of or you can say the ions have M and positive ions here, and what happened here, salt bridge जैसे हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो यहां से हमने शी इलेक्ट्रोड लगाया है, शी इलेक्ट्रोड लगाया, शी इलेक्ट्रोड लगाया है, मतलब हमने वहां पे क्या लगाया है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाया है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इफ मेटल M हैज अ हाई नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है ना। अब जो भी हायर पोटेंशियल पे होगा वहीं से क्या होता है, करंट वहीं से फ्लो होता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो इफ मेटल M हैज अ हाई नेगेटिव पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इफ मेटल M हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रॉन फ्लो की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काम, अब हमने वोल्टमीटर लगाया हुआ है, तो जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन कैथोड लगाया है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है, इसकी रीडिंग तो ऑलरेडी जीरो ही है, इसकी रीडिंग तो ऑलरेडी जीरो ही है। तो जो वोल्टमीटर पे रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी जो हमने साइड में दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया है, जो हमने साइड में दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया है, रीडिंग तो उसी की आएगी ना। So if it came to be positive here, we will write positive. If it came as a negative here, we can rewrite it negative. Is that clear? Is that clear? Is that clear now? Is that clear now? Is that clear? हम थोड़ा सा आगे बढ़ें? Yes, sir. Okay. Okay. Now, what is the significance of this electrode potential? What is the significance of this electrode potential? अरे क्यों इतना सारा सर किस्सा सुना रहे हैं, इतनी सारी डिटेल आप क्यों बना रहे हैं? आप हमें पिछले 20 मिनट से एक ही चीज पे अटकाए हुए हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? एनीबॉडी एल्स? Electrode potential gives us this tendency, it gives us the 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 capability, potential of an element to get, of an element to get oxidized, to get oxidized, to get oxidized, or to get reduced, or to get reduced, or to get reduced। जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये हम इसलिए पढ़ते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इसकी यूज ये है कि ये हमें पता दिलवाता है, ये हमें इस चीज की नॉलेज प्रोवाइड करता है कि इस एलिमेंट की कितनी टेंडेंसी है कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि रिड्यूस हो जाएगा, वो जल्दी ऑक्सीडेशन दिखाएगा कि रिडक्शन दिखाएगा। ये सिग्निफिकेंस है किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हाँ, और कुछ चीजें आप इंपॉर्टेंटली लिख के रखें, इंपॉर्टेंटली, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। द नंबर 1, मोर द पॉजिटिव, पहला वाला लिख लो, पॉइंट नंबर 1 लिख लो आप, पॉइंट नंबर 1 लिख के रखो आप, पॉइंट नंबर 1 लिख के रखो आप। More the positive value of, more the positive value of, more the positive value of SRP, more the positive value of SRP। अगर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा ऊपर है, ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है, फिर क्या हो जाएगा, more is its tendency to get reduced, more is its tendency to get reduced, more is its tendency to get reduced। इसका मतलब एलिमेंट जो है ये बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, इसमें टेंडेंसी रिडक्शन की ज्यादा हो जाएगी। सो better will be, better will act as, it will better act as, it will better act as oxidizing agent or reducing agent, reducing agent, Oxidizing. oxidizing agent, इससे अच्छा था कि तीर
कमान से एक तीर खींच लेते और सीधे मार देते मेरे सिर पे, जो आपने बोल दिया कि इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाउ कुड इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? आप समझ नहीं गए बात। जब मैं छोटा था, जब मैं भी प्लस 2 में था ना, तो मुझे भी बिल्कुल यही कंफ्यूजन होता था। मैं जिस पे रिडक्शन होता था ना, जिस एलिमेंट पे रिडक्शन होता था, तो मैं समझता था इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस पे ऑक्सीडेशन होती थी मैं समझता था इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ऐसा नहीं था। मेरे टीचर मुझे 100 बार बोलते थे कि बेटा ये रिवर्स है, ये रिवर्स है। जब मैं छोटा था, एक जोक आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज दिस इज द कोविड सिनेरियो एंड स्टूडेंट्स मस्ट हैव सम फन टू along with the class. When I was kid, I was in the third or fourth standard, I can say. I'm not remembering the particular thing, but my mom describes it to me that जब आप छोटे थे तो एक दिन आपके पापा ने तुझे बोला कि बेटा पढ़ो, अस्पताल, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को उर्दू में बोलते हैं अस्पताल। तो what I had done at that time, मैंने पढ़ा है कि वो it is हस्तपाल, it is हस्तपाल, no, it is हस्पताल। I again repeated, that is हस्तपाल। After repeating several times, मेरी अम्मी बोलती है कि जब आपके पापा ने 2-4 थप्पड़ एक साथ तुम्हें मारे, एक साथ मारे, तो आपने बोला बस पापा it is हस्पताल, it is हस्पताल। तो 5 minutes left in your scheduled meeting time. Oh, हमारे पास 5 ही मिनट रह गए। Wonderful, no worry। अच्छा, तो अब जैसे मुझे ये कंफ्यूजन था कि जिसपे रिडक्शन होती है वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसपे ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, रिवर्स है। यहाँ पे मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, मोर इज इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। इसका मतलब रिडक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। सो बेटर विल बी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर विल बी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर विल बी एक्ट एज, ये फिर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। अच्छा, मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, हाँ ठीक है ना। अब मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसओपी, मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसओपी, more the positive value of SOP, more the positive value of SOP। अगर अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ज्यादा वैल्यू आ रहा है, फिर more is its tendency to get oxidized। बहुत अच्छा, more is the chance to get oxidized, more is the tendency to get oxidized, so better will act as, oxidizing agent again, okay? Reducing agent, wonderful। Now it will act as a good reducing agent, अब आपको ये 2 पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए ना? ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए? चलिए देख लेता हूं मैं कितना समझ आया आप लोगों को, मैं ये देख रहा हूं। Suppose I have an element A, I have an element B, I have an element C, and I have an element D. A, B, C, D. I have 4 elements. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. सारा चार्ट दिख रहा है ना आपको? Yes sir। Very good। चलिए, सबसे पहले आप ये मुझे बताइए, मैंने ये यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा कि रिडक्शन पोटेंशियल लिखा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे पता चला आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? 0 से प्लस Oxidizing number increase इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन नंबर सर, यहाँ से सर ये 0 से लेके
प्लस में आ गया, प्लस एन जितना भी हो, प्लस 1 2 3 4 व्हाटसोएवर, तो ऑक्सीडेशन. नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. हाउ अबाउट दिस? Reduction potential. Very Standard good, it's reduction. reduction potential. How about this? Oxidation. Oxidation potential. And how about this? M positive. Sorry, ऐसे में लिख देता हूँ. How about this? Reduction potential. Okay. 1.1 volt, 1.2 volt, 1.3 volt, 1.4 volt, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, minus 1.1, minus 2.1, minus 2. minus 3.1, minus 3.1, minus 4.1, minus 4.1. अब मुझे बता दीजिए, पहले यहां बता दीजिए मुझे इन चार एलिमेंट्स में से A, B, C, D में मुझे बता दीजिए कि कौन सा वाला एक्ट करेगा एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट या बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दीजिए, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन आ रहा है. तो इन चार में से मुझे बता दीजिए कौन सा वाला सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. 1.1 A. हाँ, शाबाश शाबाश. कौन सा वाला एलिमेंट है? First. A. D. सोच के आंसर बताओ, सोच के. हमने 2 पॉइंट अभी लिखे. मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, more is its tendency to get oxidized. More is its tendency to get oxidized. D part. So better will be it as reducing agent. तो ये ज्यादा reducing agent act करेगा. और more the positive value of standard reduction potential. Standard reduction लिखा ना, SRP standard reduction potential की अगर more value आ गई तो वो act करेगा as good reducing agent. अब इनमें से मुझे बताइए good oxidizing agent कौन act करेगा? Good reducing agent की oxidizing agent sir. पहले good oxidizing agent. Oxidizing agent. A होना सर. A. Oxidizing तो पहला हुआ ना. 1.1 volt होगा. हाँ? 1.1 volt. A होगा ना सर. A. Very good. अच्छा, इनमें से बताओ. Now this is +1 to 0, +1 to 0, +1 या प्लस जो भी हो, यहाँ पे प्लस से 0 हो रहा है तो डिक्रीज हो गया, तो रिडक्शन हो गया ना, तो इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो हमने लिखा मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल. तो यहाँ पे मोर वैल्यू किसका है स्टैंडर्ड पोटेंशियल का? -1.1. वेरी गुड, -1.1. और यहाँ पे देखेंगे तो SRP की वैल्यू यहाँ पे 1.4 की ज्यादा. तो ऐसे कर सकते हो ना, अगर आपको कोई वैल्यू दिया गया है, फिर उस वैल्यू पे आपको ये बताया जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ SRP और SOP आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और व्हिच वन इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हिच वन इज द बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कैन यू मेक इट कंफर्म? Yes, आएगा sir. ना करना मेरे बच्चों? Yes sir. आएगा ना करना? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जी सर. अच्छे मुंह से बोलो ना, यस सर आएगा, कर लेंगे. Yes sir आएगा. वंडरफुल, बी कॉन्फिडेंट. नहीं भी आएगा तो हम यही हैं, फिर से सिखा देंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो, यस सर करके दिखाएंगे. ठीक है ना? Yes sir. हाँ, मुंह उतार के मत बोला करो. एक लड़की थी, मुझे मिली थी सांबा में. शी वाज इन +2 एट दैट वेरी टाइम. तो उसको मैंने बोला कि इस बार तू पूरे इंडिया में टॉप करेगी. तो बोला सर नहीं, इट इज नॉट जॉब ऑफ वी पीपल. मैंने बोला वी पीपल यू मीन टू से? बोला कि हम नवोदय वालों के बस की बात नहीं है. मैंने बोला फिर किन के बस की बात है? बोला ये सब कोटा वालों के बस की बात है. ओह, आई गॉट रियली सरप्राइज. मैंने बोला ये कोटा वाले कौन होते हैं? बोला सर कोटा वाले वो तो उनके पास तो फैसिलिटीज है, उनके पास तो अच्छे टीचर्स हैं, उनके पास तो अच्छी ये है वो है ये है. मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो मैंने बोला कि आपके पास आंखें कितनी हैं? बोला 2. मैंने बोला कोटा वाले में पढ़ने वाले? बोला 2.
मैंने बोला आपके पास कान कितने हैं? बोले 2। मैंने बोला कोटा में जो पढ़ रहा है उसके कितने हैं? 2। ब्रांड आपके पास 2 है कि 1 है? बोला सर 1 है। मैंने बोला जो कोटा में पढ़ रही है उसका कितना है? बोला 1 ही है सर। तो व्हाट मैटर्स इज योर हार्ड वर्क। मैंने बोला एक बार आप हार्ड वर्क कर लो तो आप कोटा वाले से भी, उसको मैंने फिर नाम भी रखा था कोटा गर्ल, मैं उसको कोटा गर्ल ही बुलाता था। एंड व्हेन रिजल्ट कैम, जब रिजल्ट आया 2-3 महीने में मैं सांबा में रहा, उसको मैंने बड़ा बूस्ट किया। तो रिजल्ट निकलने के बाद शी कॉल्ड मी, उसने मुझे फोन किया, बोला सर मैं टाइम पे जग नहीं पाई, आज रिजल्ट निकलने पे मुझे ये महसूस हो गया कि सच में मैं अगर पूरी कॉलेज के साथ, हिम्मत के साथ हार्ड वर्क की हुई होती, इट वाज नॉट ए बिग डील टू टॉप होल कंट्री। बड़ा मसला नहीं था कि पूरी कंट्री को मैं टॉप कर देता। कोई मसला ये नहीं है कि आप कहाँ रहते हो, आप किन हालात में रहते हो, आपके पास फैसिलिटी कितनी है, बट आप हार्डवर्क कितना करते हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपके पास कॉन्फिडेंस कितना है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो यस सर समझ आया, हम करके दिखाएंगे। ठीक है ना? यस सर। चलो इस उम्मीद के साथ कि अब मैं आपसे 3 दिन के बाद मिलूंगा। आई विल मीट यू आफ्टर 3 days। आई एम गोइंग होम। मैं थोड़ी सी ऑक्सीजन पी के आ जाऊंगा पेट भर के, 1-2 हफ्ते फिर चला लूंगा वो ऑक्सीजन। तो आफ्टर दैट, तो मे बी इफ आई गॉट परमिटेड फ्रॉम हियर देन आई विल सी यू आफ्टर 3 days। ओके? यस सर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, अगर मैं आपको कोई होमवर्क भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, अगर मुझे घर में मौका मिला, इन केस अगर मुझे घर में मौका मिला क्लास लेने की, तो आई विल टेक माई क्लास। अगर नहीं मिला देन आई पे सॉरी फॉर दैट, बट आपका काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इन 3 दिनों केमिस्ट्री को। आप कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेंगे, जहां तक पढ़ा है वहां से आगे रिपीट करेंगे। तो वही ठीक रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है? Yes, sir. यस सर। Thank you very much. Have a nice and blessed day. May God bless you all. And Thank do you. not Thank you, forget sir. to keep praying for me too. It is my humble request to all of you. Please, please and please. इंशाल्लाह सर। Okay, take care and goodbye. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर बाय।